ये आकाशवाणी है। अब आप ममता किरण से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 102 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस वर्ष 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए यह पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। राष्ट्र ने कल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजन में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। परेड कल सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्पांजलि के साथ प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। परेड में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को समर्पित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज गुजरात में शुरू हुई। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित होने वाली 5 दिवसीय कांग्रेस का समापन 31 जनवरी को होगा। कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन द्वारा की जाएगी। बाल वैज्ञानिकों, एस्कॉर्ट, शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि कांग्रेस में भाग लेंगे। आकाशवाणी के साथ विशेष रूप से बात करते हुए गुजकॉस्ट के सलाहकार नरोत्तम साहू ने कहा कि देश भर के लगभग 850 छात्र कांग्रेस में अपनी परियोजना पेश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीका जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत के टीका निर्माण और नवाचार क्षमता की विश्व में सराहना की जाती है, क्योंकि उसने दवाओं के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा अगला कदम गैर संचारी रोगों के लिए टीके विकसित करना होगा। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाली खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनी शुरू हुई। इसका उद्घाटन आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रदर्शनी करने का उद्देश्य खरीदारों और प्रदर्शनी में अपना सामान पेश करने वालों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करना है और उत्पाद खरीदने का समझौता करवाना है। आयोग के महाराष्ट्र कार्यालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी आयोजित की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-2024 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इससे पहले बैंकों में लगातार 4 दिन कामकाज नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल और शनिवार और रविवार को बैंक में छुट्टी रहेगी। हालांकि इस दौरान बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक कर्मचारियों की संगठन UFBU ने पहले से ही 30 और 31 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इसके अलावा महीने के चौथे शनिवार और रविवार को बैंक में अवकाश रहने की वजह से लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। लगातार 4 दिन बैंक बंद होने से आम आदमी को परेशानी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को दिल्ली में वार्षिक NCC रैली को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष दिवस कवर और 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। यह सिक्का NCC के 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल मुकाबले आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां एक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से भिड़ेगा, वहीं दूसरे में बेल्जियम नीदरलैंड से भिड़ेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड को 3-0 से पराजित कर भारत 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will interact with the students in his Pariksha Pe Charcha program at Talkatora Stadium in New Delhi today. Around 102 students across the country will attend the function. It will be the sixth edition of Pariksha Pe Charcha held every year since 2018. The Prime Minister will also interact with the parents and teachers to help and enable them to support students in accomplishing their dreams and goals. Over 38 lakh students have registered for Pariksha Pe Charcha this year, which is 50% more as compared to the previous year. The nation celebrated the 74th Republic Day with the main function held at Kartavya Path in New Delhi yesterday. President Draupadi Murmu led the nation in celebrating the day. Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi was the chief guest at the parade. At the beginning of the main ceremony, Prime Minister Narendra Modi visited the National War Memorial to lead the nation in paying tribute to the brave hearts of the country and laid a wreath. The national flag was unfurled, followed by the national anthem with a booming 21-gun salute. Reflecting the growing Atmanirbharta in defense, this year, the 21-gun salute was given with the 105 mm Indian field guns, replacing the vintage 25-pounder gun. 4 Mi-17 and V-5 helicopters showered flower petals on the audience present at Kartavya Path. During the march past, the Indian Army was represented by a mounted column of 61 cavalry, 9 mechanized columns and 6 marching contingents. Indigenously developed equipment like Arjun tank, Nag missile system, K9 Vajra howitzer gun and Akash weapon system were showcased during the parade. The 6-day mega event Bharat Parv will be open for the general public from this afternoon till 10 p.m. daily at Red Fort in Delhi. Union Minister for Culture and Tourism G. Kishan Reddy inaugurated the event last evening, showcasing cuisine and culture of different states of the country. During the event, some of the best Republic Day parade tableau was displayed as cultural performances by the zonal cultural centers and cultural troupes from states and union territories. Besides, a pan-India food court and crafts bazaar with 65 handicraft stalls also set up. Branding and promotion of Dekho Apna Desh, Ek Bharat Shreshth Bharat, G20 and Mission Life was also undertaken during the event. The 30th National Child Science Congress will begin in Gujarat today. The 5-day Congress, which will be organized at Science City in Ahmedabad, will conclude on 31st January. In the Australian Open tennis, Rohan Bopanna and Sania Mirza will take on Luisa Stefani and Rafael Matos in the mixed doubles final today. The match will begin at 6:30 a.m. Earlier, Sania and Bopanna defeated Desiree Kraljic and Neil Skupski 7-6, 6-7, 10-6 in the semi-finals. In the women's singles, Elena Rybakina stormed to her first Australian Open final with a 7-6, 6-3 win over Victoria Azarenka today. In the men's singles semi-final, Novak Djokovic will face Tommy Paul. In Indonesia Masters Badminton, Lakshya Sen, the world number 12, will now face Jonathan Christie of Indonesia today. Sen entered the quarterfinals defeating Ding Zhejiong of Malaysia in men's singles in Jakarta yesterday. The Indian shuttler won the round of 16 match 19-21, 21-8, 21-17. Lakshya is the only remaining Indian hope in men's singles, with H.S. Pranoy, Kidambi Shrikant and Priyanshu Rajawat bowing out in the first round. In women's cricket, India U19 team will face New Zealand in the first semi-final of ICC T20 World Cup at St. West Park, Potchefstroom, South Africa today. The match will begin at 1:30 p.m. The first T20 international of the 3-match series between India and New Zealand will be played in Ranchi today. The game will begin at 7 p.m. And that is the end of this news bulletin.